Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. I've got this new tutorial for you and this will be in English and in Urdu. So this is a simple makeup look. It's really easy to do and it's really nice for brides, for nikahs, for mendis, anything you could actually do this makeup on. So I've gone in with my Kat Von D brow gel first, and this is really pigmented. It's really quite dark, so I normally when I use this from the outer edges on the eyebrows, and then towards the inner side of the eyebrows I'll use my brow gel or use this very lightly. So यहाँ पे मैंने ये Kat Von D का जेल लाइनर इस्तेमाल किया है आईब्रोज के लिए। ये काफ़ी पिगमेंटेड है तो इसको काफ़ी लाइटली मैं करती हूँ और आउटर आईब्रोज से पहले शुरू करती हूँ, वहाँ पे काफ़ी इसको डिफ़ाइन कर लेती हूँ एंड देन इनर जो एरियाज़ हैं आईब्रोज के वहाँ पे लाइटली करती हूँ। इस दफ़ा मैंने बेस के लिए टू फेस का जो कंसीलर है वो इस्तेमाल किया है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चेहरे पे भी लगाने के लिए एंड एज आई बेस एज वेल। आपने देखा होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा पी लुइस का बेस यूज़ करती हूँ, लेकिन हमेशा बोलती हूँ कि कंसीलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। So I've used as my eye base the Too Faced concealer today, and I love using this on the eyes as well because it's just so creamy and pigmented as well and blends out really nicely. So I'm just using my flat synthetic brush and I'm just going around carving out the eyebrows and really shaping them, and then using a fluffy brush just to blend out everything. So I started off with my first shade, so I'm using the Jaclyn Hill palette and I'm going in for this brownie colour. So it's quite a simple subtle look I was doing, so I'm using a fluffy brush and I'm going to tap this onto the outer corners. So you can keep this, I mainly wanted this on the outer V, but then I do kind of like take it a little bit higher. So I'm tapping away, again the base is wet, so you're just going to tap this on to get your colour on first and then you're going to go back in and blend. ये मैंने जैकलिन हिल का पैलेट इस्तेमाल किया है फ्लफ़ी ब्रश से। ये जो कलर आपको दिखाया था टैपिंग मोशन से पहले लगाया था एंड इसको फिर बाद में ब्लेंड करूँगी। ये आउटर कॉर्नर पे मुझे चाहिए था ये कलर। सो बेस आपको यहाँ पे वेट होता है, आप पाउडर भी लगा सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं ज़्यादातर पाउडर नहीं लगाती क्योंकि ये मेरा पाउडर होता है तो इससे ज़्यादा वो पिगमेंटेशन आती है। So I've patted on my colour first and then I've gone in with more colour and now what I'm doing is just blending out the colour just in the outer socket area. So I just wanted more of the pigmentation just to be on the outer socket area. So टैपिंग मोशन से मैं बस इसको लगा रही हूँ। आपको नज़र आ रहा है कि बस हल्के हाथ से कलर, यहाँ पे मकसद ये है कि कलर मैंने लगाना है, यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग नहीं कर रही। यहाँ पे अगर एकदम मैं ब्लेंडिंग कर दूँगी ना तो वो जो कलर है वो वहाँ पे फिर वो सही आपको नज़र नहीं आएगा। so पहले मैं अपना कलर लगाती हूँ एंड देन उसको आहिस्ता ब्लेंड कर रही हूँ। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं बिल्कुल उस आउटर वी में नहीं हूँ, थोड़ा सा मैं ऊपर जाती हूँ। So then I've gone in with a slightly smaller brush now and a slightly darker brown colour. Now I'm sorry I didn't show you this in the video, sometimes it gets cancelled out, but all I'm doing is tapping in a little bit lower than the first colour that I used and then I'm going to blend this out. So यहाँ पे मैंने एक डार्कर ब्राउन लिया है एंड इस जो पहला ब्रश था उससे थोड़ा सा छोटा ब्रश, एंड जहाँ पे मैंने पहला कलर लगाया हुआ था ना उसके थोड़ा सा नीचे मैंने ये कलर लगाया। इसकी प्रॉपर मैंने ब्लेंडिंग नहीं की हुई, मतलब मुझे पता था कि मैंने ये अपना नेक्स्ट शेड लगाना है। So what I've done is I'm using my finger to apply this shimmery shade, and this is from the same palette. I think it's just like a light silvery colour, and I like to use my fingers to apply this. So what I do is I've not blended out the outer corners yet, I just tapped on my colour and then I'm adding this on. I always go in twice. The majority of the colour goes on to the outer corner of the eyes and then I bring my finger in towards the socket areas. So यहाँ पे मैंने फिंगर से मैंने ये प्रोडक्ट लिया है, ये सेम पैलेट से एक कलर है, वहाँ पे कोई ग्लिटर नहीं है, इट्स जस्ट लाइक ए शिमरी कलर। तो ये अपनी फिंगर की मदद से मैंने लगाया। तो इनर कॉर्नर से भी मैं ज़्यादा लगाती हूँ, देन आउटर कॉर्नर तक आहिस्ता लेके जाती हूँ। एंड देन इम्पोर्टेंट है कि जो आपका डार्क शेड आपने लगाया था ना उसको दोबारा आप करो, तो उसकी मतलब आपको पिगमेंटेशन सही चाहिए, तो उसको मैं लगा के फिर इसको ब्लेंड कर दूँगी।
So it's important to go back into your next shade, which was the outer corners, the second colour that I went in. So now I'm emphasising that outer corner again, added on a little bit more colour and then blending that out. So what I've done is I've tapped on the colour and then I'm blending, and what I'm doing is taking it across a little bit. I go across diagonally, I don't go straight down and just across, so it's not a straight line. So there's more pigmentation on the outer corner here, and then you can see I'm going across the eye to like the middle of the eye, and then I just go back in with the very first colour, just a touch of colour here, and just blend out the upper area of the eyes here. So just the transition here now. So जो पहला कलर था वहाँ से मैंने थोड़ी सी ब्लेंडिंग कर ली थी, फिर एक फ्लैट ब्रश लिया एंड थोड़ा सा जो उसमें ना एक डार्क ब्राउन सा कलर है या ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, एंड उसको थोड़ा सा लैश लाइन पे थोड़ा सा लगा रही हूँ. So I've just grabbed a flat brush, and now what I'm doing is just adding a very dark brown. You can go for black hair as well, but from the same palette. So I've used all these colours are from the same palette, from that Jaclyn Hill palette, and that is one of my favourite palettes these days to use. So I'm just running that along the lash line. Now my model did actually have extensions on, lash extensions, so they obviously are getting a little bit messy, but I'll show you how I clean them up in a bit. So I've gone in with a Rimmel liner. This was like an ivory colour, really pigmented and actually works really well on the lash line, waterline, sorry. So यहाँ पे मैंने वाटर लाइन पे एक आइवरी शेड का लाइनर लगाया है, ये रिमल का है, पेंसिल है और अच्छे तरीके से लग जाता है. तो यहाँ पे पहले मैंने बेस के जो मॉइस्चराइज़र है बस निविया क्रीम इस्तेमाल की थी. उसके बाद मैंने ये आवर ग्लास वेल प्राइमर इस्तेमाल किया है. थोड़ा सा जब ये लगाते हैं तो इसमें ये वाइट टोन आ जाता है, लेकिन ये सारा स्किन में जज़ब हो जाता है बाद में. So I went in with Nivea moisturizing cream first, and then I've gone in with my Veil primer, and that looks a little bit white, but it does absorb into your skin later on. And now I'm color correcting with my Krylon paint stick. I always mention I'm using this because I've got it, I've not run out yet, and then I'll probably move on to something else as well. But there's a few different things that you can, products that you can use, but the whole point is that it's like a darker shade and it counteracts any dark circles or pigmentation there. So it needs to be like normally an orangey brown color. So once I've applied that, I'm going in with a base now. So my foundation this time was Charlotte Tilbury, so I decided to use the Charlotte Tilbury Hollywood filter. So this is basically like a filter that you can use. It gives you that glow, and it was extremely pretty. You can't see how pretty it is here. I always find that the video doesn't show you everything, but in reality her skin was glowing and it just looked amazing. So you place this on and then you go in with your foundation. So this is supposed to give you that inner glow, smoothness and things like that, and it really was a pretty product to use. So I'll definitely be getting this in a few different shades now. So ये मैंने Hollywood filter इस्तेमाल किया है. ये है जो ये ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, शार्लेट टिल्बरी का है ये, लेकिन ये नॉर्मली एज अ बेस आप पहले इसको लगाते हैं एंड देन जो फाउंडेशन है उसको लगाते हो. तो इस दफ़ा मैंने इस्तेमाल किया था तो वीडियो में इतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही नाइस लग रहा था, बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ रहा था. फिर मैंने शार्लेट टिल्बरी की फाउंडेशन इस्तेमाल किया और ब्रश के साथ लगा रही हूँ. So next I went in with a brush. This is the Real Techniques brush, and I just placed my foundation now. So the shade was written on screen, so I've just tapped on my foundation. I blend it out a little bit with my brush, and then I go in with my damp beauty blender to blend it out properly. So this foundation is actually extremely nice. It's such a nice foundation. It really does give you it's full coverage. I think it's full coverage. You can get away with just using this foundation as well, and it gives you a really nice finish as well. As usual, if you're enjoying the videos, please do give me a like for this video, and obviously give me a comment, and do subscribe if you're not subscribing already. So now I'm using a damp beauty blender and I'm just tapping away, and again I tap away for quite a while here, and I really make sure that foundation gets absorbed into the skin, and I go down all the neck area down to the neckline. So एक damp beauty blender के साथ इसको अभी मैं blend करूँगी neck area पे भी, जहाँ तक neckline है वहाँ तक blending करती हूँ. So अभी यहाँ पे मैंने कंसीलर करना है, तो यहाँ पे मैंने Too Faced का कंसीलर इस्तेमाल किया है. ये शेड वनीला में है, एंड अंडर आइज पे नोज
के मिडल में, फोरहेड पे, चिन पे सारा लगाऊंगी. So I'm highlighting with my Too Faced concealer. I just love the way these concealers blend out. They're really full coverage as well, and the formulation is just amazing. I just think it's really nice the way everything just blends out. So I'm contouring also with my Too Faced concealer. This is in the shade Mahogany. Now this is the only shade I have, because when I initially bought these I wasn't quite sure whether I'm going to like these or not, so I like this shade. I think we could probably go a little bit lighter occasionally. I do think that, but so you just have to be a little bit careful with this product, because when you blend it out it can kind of like, you can end up covering the whole face if you don't blend correctly. So really blend out in the specific areas that you are, and I tend to kind of like work upwards and backwards and taking that product. I don't want to bring it forward, I'm taking it backwards mainly and stamping in the same position and just moving around a little bit. That's where I need my product, and then obviously when I blend out the highlighted areas I'll be able to get rid of any products if it's like kind of like, you know, if I've brought it down a bit too much, or if I want to make it a bit sharper, I can blend out with that. So I always go around everywhere first with my contour, blend that out, and then blend out my highlighted areas. So ये contouring भी Too Faced के कंसीलर के साथ ही कर रही हूँ. थोड़ा सी डार्क कलर है, इससे लाइट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी तरीके से होती है. बस ये है कि आपने जिस जगह पे लगाया है ये प्रोडक्ट, आपने ध्यान रखना है कि ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, मतलब ना अगर आप ब्लेंडिंग गलत करोगे, या आपने ये ध्यान रखना है कि पूरे चेहरे पे ना फैल जाए. सो उसी जगह पे रखें, एंड देन हाईलाइटिंग मैं करती हूँ ब्लेंड, एंड देन जो ऑब्वियसली अगर थोड़ी सी कॉन्टोर लाइंस ऊपर नीचे हो गए तो उनको मैं सही तरह कर सकती हूँ ब्लेंड करने से पहले मैंने शार्लेट टिलबरी का सेटिंग स्प्रे इस्तेमाल किया था, फिर मैंने ब्रश से अभी इसकी टैपिंग कर रही हूँ, एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर से करूँगी. So before I start actually tapping out my highlighter, I just sprayed her with some Charlotte Tilbury setting spray, one of my favorite sprays. It seems to be that I'm using a lot of Charlotte Tilbury in this video, but I do love all her products. So I sprayed her face first, and then I've gone in with my Real Techniques brush, and I'm just patting away all the concealer, all the highlighted areas, and I did use a beauty blender as well, I think. So now next I'm going in with this NARS liquid blush. So this is a really popular product at the moment, and I don't tend to use this once I've powdered, because once you've powdered and you use a liquid product it can look a bit cakey or break things up. So at this point, before I've powdered, I've added on a little bit of the NARS and using a tapping motion and really blending out that blusher. So यहाँ पे मैंने लिक्विड ब्लशर इस्तेमाल किया, ये नाज का है एंड बहुत ही पॉपुलर है. इससे अंदर से जैसे ग्लो होती है ना वो आती है, लेकिन पाउडर के ऊपर मैं ये नहीं लगाती, क्योंकि जब आप लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और आपने पाउडर बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है, फिर उसमें सेपरेशन आ सकती है एंड केकी लग सकता है, इसलिए पहले इसको मैंने लगाया है. सो अभी तक मैंने पाउडर नहीं किया हुआ. से पहले मैंने उसको थोड़ा सा लगा लिया, ब्लेंड कर लिया, एंड देन इसकी पाउडरिंग करूँगी. सो अंडर आइज़ पे भी मैंने एक थोड़ा सा लोअर लैश लाइन पे थोड़ा सा डार्क कलर लगा लिया था, फिर मैंने कहा मैं पाउडर कर लूँगी. सो लोअर मर्सियर से पाउडर मैं सेट कर रही हूँ पाउडर पफ की मदद से. So before actually powdering, I just added on my lower lash color. So because I was going in with a dark color, I just went in right against the lash line, and then I've gone in with my Laura Mercier loose powder, translucent, and I'm using a powder puff. This one's from MAC. I can't seem to find any more from MAC, but I'll be getting another one, I think. So what I do is I just use a powder puff, and I think this is the best way to apply your loose powder. So apply this, and I'm really tapping away. I'm not baking here, so it's quite a bit of powder I use, but I press until it all absorbs into the... Now I'd already applied my highlighter, and that was from Doll Beauty, Shine Bright I think it's called, and then I went in with my blusher from ELF, and this is really like pretty pink, so I've just tapped this onto the apple of the cheeks and just pulling it backwards, and then I do go back and blend that out with a beauty blender or a brush, or especially when I go back in with powdering, that's when I tend to kind of like blend these areas out. हाइलाइटर मैंने लगा लिया था पहले, वो था डॉल ब्यूटी का हाइलाइटर जो पहले भी मैं कुछ वीडियोस में इस्तेमाल कर चुकी हूँ, एंड देन उसके बाद मैंने ब्लशर इस्तेमाल किया एंड उसकी ब्लेंडिंग की है. आई लैशेज़ मैंने पहले लगा लिए थे, इंडिविजुअल लैशेज़ पहले लगी हुई थी, लेकिन मेरे मॉडल को प्रॉब्लम नहीं थी कि उसके ऊपर आई लैशेज़ लगा लूँ, एंड इसलिए बहुत अच्छा लुक आ गया था. लेकिन नॉर्मली अगर किसी ने ऐसे आई लैशेज़ लगाए हुए थे, आप नॉर्मली लगाते नहीं हो, क्योंकि वो नीचे वाले आई लैशेज़ ख़राब हो जाती हैं. तो यहाँ पे मैंने बस एक लाइट सा ब्राउन लिया और उसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ. जो डार्क कलर था ना, तो इसको अभी मैंने ब्लेंड कर दिया.
So I've just gone in and added in a lighter brown now. So I already had my darker brown on, and then I just wanted to go underneath with a slightly fluffy brush and just really warm everything up. She's also had, she's got individual lashes on, but I did end up putting a pair of lashes on top because she didn't have a problem with it. My model was fine with it. She said, you know, she's okay with that. Now, normally I wouldn't do that if it was a client because you do end up ruining the lashes, but my model knew obviously what was going to happen, and she was happy with that because I think she was having them done anyway again. So we added on a pair of lashes. So now I've gone in with my Charlotte Tilbury Flawless powder. Now I absolutely love this stuff. This really does blur out pores. Now I've gone in, you can see I'm going in underneath the eyes and the cheekbones and everywhere, just blending all the blusher out and things like that. I'm tapping it on. This is in the shade Light. There's only, I think, 4 shades, so it's the lightest one. So I've really tapped it on, but it really is, even when I've used it on my own skin, you can really see how it blurs out things, and I've got, my skin's a lot older, so it really does work quite nicely. So मैंने यहाँ पे अभी पाउडर यूज़ किया था शार्लेट टिल्बरी का ये पाउडर ना बहुत ज़्यादा अच्छा है. ये वाकई जैसे अंडर आइज़ को ना ब्लर कर देता है, आपकी जो फाइन लाइंस होती हैं, तो इट्स रियली नाइस. तो एक फाइनल सेटिंग कर दी थी इस पाउडर के साथ. लिपस्टिक अप्लाई की है, डिटेल्स लिखी हुई है. एंड फिर यहाँ पे ना, क्योंकि आई लैशेज़ पहले लगी हुई थी, मैंने दूसरी लैशेज़ लगाई थी, एंड देन एक लिक्विड आई लाइनर लिया है. तो जस्ट ये जो एजेस है इनको मैं क्लीन कर रही हूँ और थोड़ा सा वहाँ पे बेस दे रही हूँ, कि हालांकि मुझे प्रॉपर एक आई लाइनर नहीं चाहिए था. So I'm just cleaning up the eyes with a little bit of eyeliner. This was the final look. It was absolutely stunning. She really did look flawless, mashallah. So I'm going to leave you to watch the rest of the videos and the final look. I hope you've enjoyed this video, and I will be seeing you soon, inshallah. I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, and please like,